a stone falls freely under gravity, it covers distances x1, x2 and x3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. If a stone falls, suppose A point say, and in first 5 seconds it reaches at B, in next 5 seconds it reaches at C, and in next 5 seconds it reaches at D. So AB is H1, BC is H2 and this is H3. So H1 U is equal to 0. H का फॉर्मूला होगा यू टी प्लस, अगर हम केवल डिस्टेंस लें, टी स्क्वायर, और 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर. H1 होगा हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, हाफ जी इंटू 25. H1 प्लस H2 होगा हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर, और H2 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर माइनस H1 2g इंटू 25, हाफ जी इंटू 75. Similarly, H3 will be हाफ जी इंटू 15 का स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ जी इंटू 125. तो H1 रेशो H2 रेशो H3 या हम H2 is half g into 75 or 3 into half g into 25. This is H1. So 3H1 or H1 is equal to H2 by 3. 1. H3 is equal to half G into 125 or 5 into half G into 25. This is again H1, 5 H1. So H1 is equal to S3 by 5. So H1 is equal to S2 by 3 is equal to S3 by 5. B is correct option.